Students, now we read about lesson number 2, animals and human beings. In this lesson, we read about animals and human beings. They have some similarities, but they are different how to each other. Animals and human beings communicate in different ways. We know that animals and human beings communicate करते but different ways से. Look at the picture given and discuss how they communicate. We are seeing a picture here. These pictures are given there. Think how they communicate. Human beings communicate, you saw, but how you seen? Have you seen how bees communicate to each other, how aquatic animals communicate to each other, and how birds communicate to each other? Now we read about. Here is given. We have already learned that human beings, animals, and plants all are living things. We know that human beings, animals, and plants are living things. Human beings and animals have a lot of similarities, but they also differ from each other. We know that animals can move, human beings also can move. Animals need food, human beings also need food. They have similarities, but they are different from each other. Now, let's us learn about the characteristics and features of animals and human beings. Now we read about characteristic features of human beings and animals. First we read about characteristic features of animals. Now we read about animals. First is given. Animals and birds move from one place to another in search of food and shelter. Animals and birds move करते हैं from one place to another place in search of food. Animals and birds move. Why they move? In search of food and shelter. Next is given. Here is given some examples. Birds have wings to fly. Birds have wings. Wings means पंख होते किसके? Birds के. To fly, उड़ने के लिए. Birds can move from one place to another place with the help of their wings. Next, here is the most animals use their forelegs to move about, and most animals use their forelegs to move here to there. Birds move with the help of wings, but animals move with the help of legs. Number 2. Some animals live in their natural environment. Some animals live रहते हैं in their natural environment. जैसा भी environment हो वैसे ही रह लेते हैं. While some animals make their own homes. But some animals क्या करते हैं? Make करते हैं किसको? Home को. A lion lies in a den. Lion कहाँ पे रहते हैं? In a den. A rat lives in a hole. Where rat lives? In a hole. A rabbit lives in a burrow. A rabbit lives in a burrow. Next, number 3 is given. Some animals eat only plants. Some animals eat only plants. Some animals eat only flesh. And some animals eat both plants and flesh. Now we read about. Some animals eat only plants. Those animals eat only plants. Example is cow, goat, ox, buffalo. Next is given. Some animals eat only flesh. Some animals eat only plants. But some animals eat only flesh. The example is owl, tiger. Who eat only flesh? Owl, tiger, lion, etc. Next is given. Some animals eat both plants and flesh of other animals. But some animals eat plants and flesh both. These examples are bear, crows. We read about these animals carefully. Some animals eat only plants. They are cow, goat, ox, buffalo. Next, some animals eat only flesh. They are owl and tigers. Some animals eat plants
and flesh of other animals, bears, crows. Number 4. Animals communicate with each other by making different sounds. We communicate, you saw, but animals also communicate with each other with the help of sounds. Some example is given here as like frogs. Frog make a sound croak, croak. Birds chirp, lion roar. Parrot, parrot can talk. Some parrots can talk. You saw in Motu Patlu episode, a parrot can talk, imitate human's voice. In human voice, a parrot can talk in human's voice. Next is given number 5. Some animals can change their body temperature to that of their surrounding. These are called cold-blooded animals. Some animals can change body temperature according to their surrounding. They are called cold-blooded animals. Some animals can change their body temperature according to their surrounding. They are called cold-blooded animals. Some example is given: snakes, frog, and fish. They are cold-blooded animals. Next is given: some animals cannot change. Some animals can change their body temperature, but some animals cannot change their body temperature according to their surrounding. They are called warm-blooded animals. Those animals can change their body temperature. They are called cold-blooded animals. But some animals cannot change their body temperature. They are called warm-blooded animals. Warm-blooded examples is birds, lions, and tigers. You read this part of the lesson carefully. Animals that have 6 legs are called insects. Those animals have 6 legs. They are called insects. Example is given: termites, mosquitoes, and grasshoppers. Example of animals those have 6 legs: termite, mosquito, grasshoppers. नेक्स्ट इज गिवन सम एनिमल्स ले एग्स. सम एनिमल्स क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं टू रिप्रोड्यूस. टू रिप्रोड्यूस मीन्स गिव अ बर्थ to young ones. But some animals give birth to young ones. But some animals give directly birth to young ones. Now we do fill in the blank. Number 1. Birds have to fly. Birds के क्या होते हैं? Wings. The right answer is wings. Now B part is number 2. A blanks, crow, cow, fox, tiger eats only plants. Who eats only plants? Crow, cow, fox, tiger. Cow. Cow is the right answer. Number 3 is blanks eats only the flesh of other animals. Eat only flesh: an owl, a goat, elephant, deer, and owl. Right answer is owl. Number 4 is given: a blanks eats both plants and animals. Animals those eat plants and animals. Crow. So our fill in the blanks. Right answer is first right answer is wings. Second right answer is cow. Third right answer is an owl. And fourth right answer is crow. You fill in the blanks in your book and read the lesson here. Hello kids, in this video we learn about characteristics features of human beings. In previous video we read about characteristics features of animals. Now we read about characteristics features of human beings. Number 1 is given: human beings have 2 hands. Human beings के क्या होते हैं? 2 hands होते हैं and 2 legs. 2 legs होते हैं. They walk in an upright position. They walk. वो चल सकते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अपनी लेग्स की हेल्प से. अपराइट पोजिशन मीन्स खड़े होकर चल सकते हैं. सेकंड इज गिवन: ह्यूमन बींग्स लिव इन हाउसेस दे बिल्ड. ह्यूमन बींग्स लिव मीन्स रहते हैं. इन हाउसेस घरों में. दे बिल्ड मीन्स बनाना, जो वो बनाते हैं. ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते हैं? अपने हाउसेस में जो वो
बनाते हैं। नंबर थर्ड इज गिवन ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ईट करते हैं किसको, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट्स पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। नंबर फोर ह्यूमन बींग्स स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज मीन्स भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकते हैं। दे कैन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करना, दे कैन कम्युनिकेट वो कर सकते हैं बातचीत, देयर फीलिंग्स टू अदर्स इजीली, अपनी फीलिंग्स की अपने विचारों की क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी इजीली थ्रू स्पीच, किसके जरिए, स्पीच बोलकर या भाषण देकर। नेक्स्ट इज गिवन नंबर फाइव ह्यूमन बींग्स आर वार्म बर्डेड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स कैसे एनिमल कैसे हैं, वार्म बर्डेड एनिमल्स। कौन सी कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन बींग्स, वार्म बर्डेड एनिमल्स। दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। वे प्रोटेक्ट करते हैं किसको, अपने आप को, किससे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स की हेल्प से वे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ clothes. जैसा in winter season you wear woolen clothes and in summer season you wear cotton clothes. Next is given number 6 human beings reproduce by giving birth to young ones. Human beings क्या करते हैं, reproduce by giving birth to young ones. Human beings यंग वंस का बर्थ देते हैं, अपने जैसे वो है वैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। नंबर 7 इज गिवन ह्यूमन बींग्स वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वियर करते हैं वूलन क्लोथ्स को ड्यूरिंग विंटर में एंड कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, और कॉटन क्लोथ्स को इन समर में। गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में वूलन के कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट यूनिक फीचर्स इन ह्यूमन बींग्स। कुछ यूनिक फीचर्स हैं, यूनिक मीन्स अलग, फीचर्स विशेषताएं हैं किसमें, इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर। आ यूनिक फीचर इन ह्यूमन बींग्स इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूनिक फीचर है वो किससे है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग, उनके दिमाग के विकास की वजह से है। नेक्स्ट मोस्ट एनिमल्स हैव ए ब्रेन। मोस्टली एनिमल्स हैव ए ब्रेन, ब्रेन रखते हैं बट इट इज नॉट मच डेवलप्ड, बट डेवलपमेंट उनका विकास ज़्यादा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स हैव ब्रेन बट हिज ब्रेन इज डेवलप्ड, बट एनिमल्स, सम एनिमल्स हैव ब्रेन बट इट इज नॉट मच डेवलप, वो ज़्यादा विकास, उनके दिमाग का ज़्यादा विकास नहीं होता। नेक्स्ट इज गिवन द ह्यूमन बींग्स इज वेल डेवलप्ड। ह्यूमन बींग्स क्या, वेल, वेल मीन्स अच्छे से, डेवलप विकसित है। ह्यूमन बींग्स कैन थिंक, थिंक मीन्स सोचना, विच हेल्प देम टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो हेल्प करता है क्रिएट करने में, बनाने में, समथिंग न्यू चीज़ें, जो हेल्प करता है क्रिएट करने में नई नई चीज़ों को। और ह्यूमन बींग्स कैन थिंक विच हेल्प देम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स का ब्रेन जो है सोचने में हेल्प करता है एंड क्रिएट न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कंस्ट्रक्ट बनाते हैं बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें। स्पीक मैनी लैंग्वेज, और वो क्या कर सकते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, मैनी लैंग्वेज अनेक भाषाएं बोल सकते हैं। एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स, इन्वेंट मीन्स होता है खोज करना, खोज करते मैनी थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं। स्टूडेंट्स यू रीड अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, रीड योरसेल्फ। Students, now we do exercise of lesson 2. Match the following. First is given herbivore. Herbivore are that animals, they eat only plants. It means God. Here is given insect, which is insect. In these pictures, insect is butterfly. Next, imitate
human voice. Who imitate human voice? Parrot. So we match for parrot. Warm-blooded animals and cold-blooded animals. Snake is the cold-blooded animals and warm-blooded animals is lion. You match here. You can write number here. Herbivore C and insect D. Imitate human voice A. Warm-blooded animals E and cold-blooded animals B. You can write numbers as like. Now we do question number 2. Choose the correct answer and fill in the blanks. A part is given. A lion lives in a lion कहाँ पे रहता है? In a den. The right answer is den. Second is given. B part. A blank lives in a hole. Hole में कौन रहता है? Rat. That is the right answer. C is given. A blank is a warm-blooded animals. Right answer is tiger. D part is given. Blanks walk in a upright position. Human beings can walk in upright positions. Next is given. Human beings eat the flesh of other animals, both plant and flesh of other animals, plants या metals. So both plants and the flesh of other animals. Third is the right answer. Now we do question number 3. Put tick if the sentence is correct and cross if it is wrong. In question 3, if these statements are right, we tick right. If these statements are wrong, we put cross. Number 1 is given. Spider is an insect. Spider क्या है? Is an insect? Yes, it is true. Animals cook food. Animals क्या करते हैं? Cook. Cook means पकाते हैं food. No, animals don't cook food. So it is wrong statement. Human beings give birth to young ones. Human beings क्या करते हैं? Give birth. Birth देते हैं to young ones. Yes, it is right. The right answer is this. D part is given. Human beings are cold-blooded animals. No, it is wrong. Human beings are warm-blooded animals. Animals can invent many things. No, it is wrong. Who invent many things? Human beings. If there is given human beings can invent many things, answer will be right. Now our answer is wrong. Animals can invent many things. It is wrong. You fill these questions in your book.